Okay, so Assalamu alaikum. Well, in this video, we are going to talk about the remaining topics of norma lateralis and the attachments of different muscles and the passage of different structures which are going to be seen over there. So, first of all, let's talk about the mastoid part of temporal bone. This is squamous part of temporal bone, and this hole is the mastoid part of temporal bone. And as you can see, that it is lying just inferior to it, and it's connected with the squamous part by a suture called as the temporomastoid suture. Okay, or the squamomastoid suture, right? So the mastoid bone articulates with superiorly with definitely with the squamous part here, and posteriorly with the temporal part through the parietomastoid suture. यहाँ पे कौन सा था squamomastoid suture, यहाँ parietomastoid suture, और यहाँ पर with the occipital bone it is connected with the occipitomastoid suture. Now as you can see that this suture and this suture are both connected to this posterior suture that was a lambdoid suture. So this is the point of union of three sutures. Which one? कौन से यहाँ पर occipitomastoid suture, squamomastoid suture, and this is a lambdoid suture. The point of union of these three sutures are called as the ostrion. Okay, and this region is important because at the region of ostrion we also find our posterolateral or mastoid fontanelle, that is area of potential space during development, which definitely ossifies by 12 months. In children में ये होता है बच्चों में. So okay, so then we talk about another process called as the mastoid process. This is elongated, or you can say a breast-like process from the mastoid part of temporal bone, and it is present inferiorly. Okay, so this is important because this has a foramen near it, where it is having a suture with the occipital bone. There is the presence of a mastoid foramen. उससे कौन सी चीज़ें गुजरती हैं वो हम बाद में देखते हैं. So it is lying quite postero inferior to the external acoustic meatus. This is the external acoustic meatus. Okay. So then we also find the tympanomastoid fissure that is placed on the anterior aspect of the base of mastoid process. यहाँ पे हमें एक tympanomastoid fissure नज़र आता है, क्योंकि ये हमारी tympanic प्लेट होती है सीजन में, और ये है हमारा मास्टर्ड प्रोसेस. तो यहाँ पे टिम्पैनोमास्टर्ड फिशर होता है. अब उसमें से क्या कुछ गुजरता है वो फिर हम बाय द एंड ऑफ लेक्चर देख लेंगे. सो yeah, that was all we needed to know by now. Okay, next is the styloid process. Styloid process is basically an extension of the sphenoid bone. Okay, and basically हमें norma basalis में से नज़र आती है, but it's lying quite anteromedial to the mastoid process. हम उसको रिलेशन में भी देख लेते हैं. So this is the, you can say, styloid process, और ये basically sphenoid bone का component है. And हमें इतनी चीज़ नज़र नहीं आती क्योंकि it is covered by the ramus of mandible. This ramus covers it laterally, and also यहाँ पर हमें एक tympanic plate भी नज़र आती है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था. It's a part of temporal bone which is separating the external acoustic meatus from the condylar part of the zygomatic bone. Okay, so that was all about the all this region. हमने एक देख लिया प्रोसेस, एक देख लिया स्पाइन, और एक हमने देख लिया यहाँ पर tympanomastoid fissure, और ये हमने देख ली sutures. Then we have the temporal fossa, which is this whole depression found on the lateral aspect of the skull, and as you can see that's bounded above by the superior temporal line. This superior temporal line is binding it from upwards. Below it is bounded by the zygomatic arch laterally zygomatic arch, this hole, and the infratemporal crust as well. And then we also find the infratemporal crust. Now what is infratemporal crust? It is basically lying on the medial aspect. यहाँ पर कहीं present होता है. एक तो ये है ना, this is the suprameatal crust, basically above the external acoustic meatus. एक present होता है infratemporal crust, जो कि medially present होता है. ये जो sphenoid bone है इसके greater wing से बनता है, inferiorly जो norma basalis ज़्यादा अच्छा नज़र आता है. In this view it is not seen, but medially it forms the lower margin of this temporal fossa, and we call that infratemporal crust. This was a suprameatal crust. Okay, this one. Okay, so then we see that central wall is being formed by the zygomatic bone here. Okay, and by also some parts of the frontal bone, and this sphenoid bone also takes part in this formation of the anterior boundary. Then its floor, as you can see, यहाँ पे जो important structure हमें नज़र आता है वो एक H-shaped suture नज़र आता है. This suture is being formed by frontal bone, parietal bone, sphenoid bone, and the temporal bone, and this whole of the H-shaped suture we call this as pterion. Okay, and this is an important point because this is quite a thin region, and ये कनपट्टी का region में जहाँ पे God forbid some people commit suicide by
firing at this region. And this region is important. Why? Because deep to this region, deep to this pterion region, we are having the passage of mass. By mass I mean middle meningeal vein, anterior division of middle meningeal artery, and the stem of lateral sulcus of brain. These three regions are are the important constituents which are lying inferior internally to the pterion. कौन सी चीज़ें हैं? मिडल मेनिंजियल वेन, एंटीरियर डिवीजन ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्टरी, एंड द स्टेम ऑफ द लेटरल sulcus ऑफ ब्रेन. ओके, देन वी से दैट ऑन द टेम्पोरल सर्फेस ऑफ द zygomatic बोन, जो कि यहाँ पे बना रही है इसका एंटीरियर एस्पेक्ट, वी आल्सो हैविंग द zygomatic टेम्पोरल फोरामेन, जो कि यहाँ पे नजर आ रहा है हमें. दिस इज द zygomatic टेम्पोरल फोरामेन. और ऑल दिस फोरामेन्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे गिव passage to the some of the important structures. Okay, so that was all about the remaining aspects of the lateral view या norma lateralis. हमें बस ये चीज़ें जाननी थी इसके बारे में. Then we'll talk about the several structures which are present or attached on norma lateralis. First one is the temporal fascia. Temporal fascia simply the aponeurosis of the temporalis muscle जो कि present होता है within the temporal fossa. हमने यहाँ पे temporal fossa देखा था, उसी के अंदर present होता है temporalis muscle जो कि फिर एक aponeurosis बनाता है which we call as the temporal fascia. It is attached to the superior temporal line जो कि यहाँ present होती है, the superior superior temporal line होती है यहाँ पे, and the area between the two temporal lines, and inferiorly it will get attached to the inner and the outer lips of the zygomatic arch जो कि यहाँ पे present थी. So this was all about the temporal fascia. Then we have the temporalis muscle. You can see that it is covering or it is occupying the whole of the temporal fossa, and then it is you can see getting attached to the level just here. यहाँ पे कौन सा region present था? If you can recall, this is also zygomatic bone. ठीक है. So in this way it is having its all of its attachment, and then we say that deep to this temporalis muscle we are having the deep temporal vessels and nerves and the middle temporal vessels. एक तो इसके नीचे पढ़े होंगे deep temporal vessels and nerves, and the middle temporal vessels will produce certain markings above the external acoustic meatus. यहाँ पर external acoustic meatus है, इसके ऊपर कुछ markings बना देती है middle temporal vessels. Okay. So this was the temporalis muscle जो कि whole of the temporal fossa को cover कर रही होती है. Then we have another muscle called as the masseter muscle. This masseter muscle is attached on the medial surface and the lower border of the zygomatic arch, as you can see. So this is the masseter muscle, which along with the temporalis muscle is important for clenching of teeth and the chewing action. This temporalis and the masseter muscle are important for chewing action. So this was a masseter muscle on the inferior and the medial aspect of the zygomatic arch. Okay, then we have a ligament called as the lateral ligament of temporomandibular joint. As you can see that this is the temporal part of zygomatic bone, and this is the condylar part of mandible. So these two are forming the temporomandibular joint. At this region we are also having a temporomandibular ligament. So or we call this as a lateral ligament because it is present on norma lateralis. So हमें इसकी attachment भी यहाँ पर देख ली है on the lateral aspect. Then we have the attachment of three muscles on the mastoid process. If you can recall, हमने mastoid part of temporal bone में एक हल्का सा breast like process देखा था. That was the mastoid process. ये mastoid process तीन muscles को from before backwards तीन muscles को attachment दे रहा है. अब हम anterior to posterior उनकी attachments देख लेंगे. First one is the sternocleidomastoid muscle जो कि anterior aspect of mastoid process के ऊपर लगा हुआ है. ठीक है. Second one is this muscle splenius capitis जो कि middle of the या थोड़ा सा पोस्टीरियर करके बैकवर्ड्स ऑन द मास्टर्ड प्रोसेस अटैच हुआ और ये पोस्टीरियरली मूव कर रहा है. वो स्टेनोक्लेडोमास्टर्ड एंटीरियरली अटैच था. थर्ड इज़ द लॉन्गिसिमस कैपिटिस. ये सबसे बैकवर्ड अटैच होता है ऑन द मास्टर्ड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन, एंड यू कैन सी इट्स अटैचमेंट. सो टू मसल्स आर गोइंग बैकवर्ड्स एंड वन ऑन फ्रंट. सो फ्रॉम बिफोर बैकवर्ड्स वी आर हैविंग अटैचमेंट्स ऑफ थ्री मसल्स ऑन द मास्टर्ड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन. Alright, then we talk about some other structures. We talk about this one notch present anterior to the mastoid process. ये mastoid process है, इसके anteriorly हमें एक notch नजर आती है somewhere here. This we call as a mastoid notch, and it is important because it is giving origin to the posterior belly of the digastric muscle. This is a digastric muscle. You can see that it's originated from an arch of the in front of the mastoid process. So it has some two bellies. The posterior belly gets its origin from where? The mastoid notch in front of the mastoid process. Okay, then we talk about a gap between the zygomatic arch and the side of the skull. यहाँ पर gap बच जाता है
ये ज़ाइगोमेटिक आर्च थी, ये साइड ऑफ स्कल है, इसके दरमियान में गैप होता है जहाँ से पैसेज होता है 3 चीज़ों का। टेंडन ऑफ टेम्पोरालिस मसल यहाँ से पास कर रहा होता है, ठीक है। डीप टेम्पोरल वेसल्स यहाँ से पास, क्योंकि पूरा टेम्पोरालिस का रीजन है तो यहाँ पे टेम्पोरल वेसल्स ही होंगी ना डेफिनेटली। सो डीप टेम्पोरल वेसल्स यहाँ से पास करते हैं और डीप टेम्पोरल नर्व्स यहाँ से पास करते हैं। तो टेंडन ऑफ टेम्पोरालिस मसल, डीप टेम्पोरल वेसल्स एंड डीप टेम्पोरल नर्व्स आर गोइंग टू बी पासिंग फ्रॉम हियर। देन वी टॉक अबाउट सेवरल फोरामिना व्हिच आर गिविंग पैसेज टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ओके, पहले हम यहाँ पे एक और चीज़ दिखाते हैं। यहाँ पे प्रेजेंस होती है टिम्पैनो-मास्टर्ड फिशर की, जो हम पीछे भी देखा था, है ना। कहाँ पे प्रेजेंट था वो? एंटीरियर टू द मास्टर्ड प्रोसेस, यहाँ पर कहीं प्रेजेंट था टिम्पैनो-मास्टर्ड फिशर। ये टेम्पोरल पार्ट ऑफ ज़ाइगोमेटिक आर्च है ना, ये पूरे ज़ाइगोमेटिक आर्च है और ये है टेम्पोरल पार्ट ऑफ ज़ाइगोमेटिक आर्च। इसके और मास्टर्ड प्रोसेस के दरमियान में एक फिशर होता है, एक ग्रूव होता है विच वी कॉल एज दी टिम्पैनो-मास्टर्ड फिशर, और इट इज़ गिविंग पैसेज टू द ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस नर्व। बिकॉज ये ईयर का रीजन है तो यहाँ पे ऑरिकुलर वाली चीज़ें भी होंगी। सो ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस नर्व इज पासिंग थ्रू द फिशर बिटवीन दीज टू रीजन कॉल्ड एज दी टिम्पैनो-मास्टर्ड फिशर। देन वी हैव अ फोरामन कॉल्ड एज ए मास्टर्ड फोरामन, जो कि प्रेजेंट है यहाँ पर। मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि जहाँ पर मास्टर्ड पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन बना रहा था स्यूचर विद द ऑक्सीपिटल बोन, उसके दरमियान उसके एंटीरियरली एक छोटा सा फोरामन प्रेजेंट था, दैट वाज कॉल्ड एज द मास्टर्ड फोरामन। एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ गिविंग वे टू अ मिजरी वेन। मिजरी वेन बेसिकली कनेक्ट करी यहाँ पे इसके अंदर जो साइनस है, दैट इज सिग्मोइड साइनस, उसको, और यहाँ पे जो बाहर एक वेन रन कर रही होती है, दैट इज़ द पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन। तो पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन को सिग्मोइड साइनस के साथ कनेक्ट करने का काम होता है एक मिजरी वेन का, जो कि पास कहाँ से करती है, तो द मास्टर्ड फोरामन प्रेजेंट जस्ट पोस्टीरियर टू द मास्टर्ड पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। ओके, देन वी हैव another foramen, that is a zygomatic-temporal foramen, zygomatic bone और temporal part of zygomatic arch के दरमियान में एक foramen होता है, that is called a zygomatic-temporal foramen, and it's giving passage to the nerve of the same name, that is a zygomatic-temporal nerve, यहाँ से पास कर रही होती है, और एक छोटी सी artery to the zygomatic bone as well. So with this note we are done with all the topics of norma lateralis and all the structure that is present there. So I hope कि समझ आ गई होगी। This was a part 2 of our video on norma lateralis. Thank you.